Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving Test Yourself from chapter Circles. So let's start with question number 11. In the given figure, ABC, AEQ and CEP are straight lines. Show that angle APE and angle CQE are supplementary. We are given the figure over here. ABC, AEQ and CEP are straight lines. That is the only information given. We need to show, that is prove, that angles APE and CQE are supplementary. Supplementary means sum is 180 degree, right? So angle APE and angle CQE का sum is 180 degree. That is what we have to prove. Okay. APE and CQE, ये दो एंगल्स का सम, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों का सम is 180. That is what we have to prove. For this, let us do one thing. Let us consider the two circles separately. ठीक है, दोनों को separately consider करते हैं. So first I'll draw the left circle. A, B, P and E are the points on this left circle. Okay, so P, E. एंगल APE यहाँ पे है, ठीक है, और CQE. APE ये सर्कल का पार्ट है, CQE ये राइट वाले सर्कल का पार्ट है, ठीक है. सो CQE के लिए राइट वाला सर्कल कंसिडर करते हैं. स्टूडेंट्स, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. BC, Q and E. So B and E are the points lying at the intersection of the two circles. So जहाँ पे ये two circles intersect होते हैं वहाँ पे B and E lie करता है. So B and E is lying on this circle as well as this circle. ठीक है. So ये CQE. Okay. Let us join B and E. ठीक है. So B and E join करते हैं. ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा, यहां पे भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा, राइट. सो व्हेन यू जॉइन BE, ये BE को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लेफ्ट सर्कल में मिलेगा एंड राइट सर्कल में भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मिलेगा, ठीक है. व्हाट वील डू इज APE में मुझे इंटरेस्ट है एंड यहाँ पे CQE में राइट सर्कल में, ठीक है. तो APE का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? APE का ऑपोजिट एंगल इज ABE. We are considering this cyclic quadrilateral. It is a cyclic quadrilateral because the vertices are lying on the circumference of the circle. And for cyclic quadrilateral, we know opposite angles are supplementary. So APE का opposite angle कौन सा है? APE का opposite angle ABE है. Okay. So APE plus ABE will be equal to 180 degree. For left circle, we have angle APE plus angle ABE equal to 180 degree, right? So this angle plus this angle is equal to 180 degree. Same way यहाँ पे CQE में मुझे इंटरेस्ट है, तो CQE का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? Again, this is a cyclic quadrilateral, so I can use the property opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary. So CQE plus CBE will be equal to 180 degree. CQE का opposite CBE है. So in right circle, angle CQE plus angle CBE is 180 degree. Correct? Now
ABE and CBE, ये मेन डायग्राम में देखते हैं। ABE and CBE, ये दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये ABC बनता है, राइट। BE, यहाँ पे ABE है एंड ये CBE है, करेक्ट। दोनों एंगल्स को एड अप करें तो ये ABC बनता है एंड इट इज गिवन टू अस दैट ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? इट इज 180 डिग्री। सो दिस एंगल is 180 degree, correct? So ABE and CBE दोनों का सम 180 डिग्री होगा, right? So what we'll do now is, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, we'll mark this as 1, this as 2, add 1 and 2. So when you add 1 and 2, LHS add हो जाएगा, ठीक है। So LHS में एंगल APE प्लस एंगल ABE, ओके, एंड CQE एंड CBE, ये चारों एंगल्स ऐड हो जाएंगे एंड RHS में 180 प्लस 180 दैट इज 360, करेक्ट। नाउ APE एंड CQE, ये दोनों को साइड में रख देते हैं। APE प्लस CQE, ABE प्लस CBE क्या है? 180 डिग्री, राइट, because they are forming linear pair. ABE and CBE are forming linear pair. So ABE plus CBE 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। स्टूडेंट्स अभी रफ में देख रहे हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ABE प्लस CBE इज 180 डिग्री। सो यहां पे पुट करते हैं ABE प्लस CBE, we'll group together, okay, and next step में you will put the value ABE plus CBE is 180 degree, ठीक है। So next step में you will put the value, so angle APE plus angle CQE plus 180 is equal to 360, correct। 180 को शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 360 minus 180 that is 180। So we got angle APE plus angle CQE is equal to 180 degree. That is what we had to prove, right? So the two angles are supplementary. Angle APE and angle CQE are supplementary because the sum is 180 degree. First we'll write down the given, that is ABC, AEQ and CEP are straight lines. We need to prove or show that angle APE and angle CQE are supplementary. That is, ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। So we need to show the sum is 180. APE and CQE, okay. Before starting with the proof, construction करना है। We joined BE, so write down join BE. Now we'll start with the proof. बहुत ही easy है। First we'll consider the left circle, okay. Left circle में APE, ये एंगल को मुझे रिलेट करना है किसी एंगल से। For that we'll consider this quadrilateral. ABEP is a cyclic quadrilateral because the vertices A, B, E and P are lying on the circumference of the circle. Okay, so first thing that we'll do is we'll write down that this quadrilateral is a cyclic quadrilateral, all right. And once we show that it is cyclic, we can say that the sum of the opposite angles is 180 degree, ठीक है, that is opposite angles are supplementary.
So quadrilateral ABEP is a cyclic quadrilateral. From the figure, okay, we joined BE तो ये quadrilateral बन गया, ठीक है. So angle APE plus angle ABE is 180 degree. APE and APE का opposite angle ABE दोनों का sum will be 180 degree. Give reason opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Okay. Mark this as 1. Same way we'll consider the right circle now. ये right circle में we'll consider this quadrilateral. ठीक है. तो CBEQ ये quadrilateral consider करेंगे. In this quadrilateral we need to relate CQE with another angle. So CQE का opposite angle कौन सा है? CBE. दोनों का sum क्या होगा? 180 degree. Again why? Because this is a cyclic quadrilateral and in a cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. So quadrilateral CBEQ is a cyclic quadrilateral. Again give the reason from the figure. Angle CQE plus angle CBE is 180 degree. Mark this as 2. यहाँ पे भी reason दो, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Okay. Now ABE and CBE. ABE and CBE. These angles are forming a linear pair. Okay. So how they are forming a linear pair? Because we know ABC is a straight line. ठीक है, ये straight line है. So first we'll write down ABC is a straight line. ठीक है, ABC is a straight line. This is given to us. So therefore angle ABE and CBE दोनों का sum is 180 degree. ABE plus CBE 180 degree linear पे. प्लीज रीजंस मत भूलना स्टूडेंट्स. ओके, हर एक जगह पे रीजंस देना इंपॉर्टेंट है. मार्क दिस एज 3 बिकॉज AB प्लस CB 180 है. यह वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं. ठीक है. सो नाउ वील ऐड 1 and 2. सो एडिंग 1 and 2, LHS ऐड होगा APE प्लस ABE and CQE plus CBE. RHS ऐड होगा 180 plus 180. So APE and CQE, we'll bring it on the side and group ABE and CBE. यहाँ पे 360 हो जाएगा. ABE plus CBE is 180 from 3. So वैल्यू पुट करेंगे. APE plus CQE plus 180 is equal to 360. From 3 यहाँ पे लिख लेना. ठीक है. APE plus CQE is equal to 360 minus 180. That is equal to 180, right? बॉक्स और अंडरलाइन एंड इसके बाद स्टेटमेंट ऐड कर दो. एंगल APE एंड एंगल CQE आर सप्लीमेंट्री. आई एम नॉट राइटिंग डाउन, जो यहाँ पे लिखा है बस वही लिखना है. ठीक है. एंगल APE एंड एंगल CQE आर सप्लीमेंट्री. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O. If angle ADC is equal to 32 degree, find angle BOC. So we are given the figure over here. O is the center of the circle. AB is the diameter. And
एंगल ADC दिया है, it is 32 degree. Okay, angle ADC is given. We need to find out angle BOC. बहुत ही easy है, very very easy. ADC is given to us, then we can easily find out angle AOC. सेंटर O है, this arc AC is subtending AOC. It is forming angle AOC at the center, and this same arc is subtending another angle on the circumference. So the same arc is subtending angle ADC, which is on the circumference. Right? And ADC मुझे पता है 32 डिग्री है. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. So angle subtended at the center is AOC, and angle subtended on the circumference is ADC. AOC will be twice ADC. AOC will be equal to 2 times ADC. कितना है? 32. So AOC will be 64. Right? So AOC मुझे मिल जाएगा 64 डिग्री. Once I get AOC, I know AB is the diameter. Diameter है मतलब straight line है. That is, it will be 180 degree. Angle of the straight line is 180 degree. So again I'll draw separately. O center है, AB diameter है, center से पास होगा, right? AOC मुझे मिल गया 64 है, right? 64. BOC find out करना है. AOC and BOC form a linear pair because this is a straight line. So angle AOC plus angle BOC will be 180 degree. AOC is 64. So BOC कितना हो जाएगा? 180 minus 64. You will get the answer. Okay. So to find out BOC, we need to find out AOC. AOC कैसे मिलेगा? AOC is the angle subtended at the center by this arc AC, and the same arc is subtending another angle ADC on the circumference. Now angle subtended at the center, that is AOC, will be twice the angle subtended on the circumference, that is ADC. So we'll get AOC. Once you get AOC, AOC and BOC are forming linear pair, so you can easily find out BOC. Alright, so जो minute details दिया है, that is helpful. Okay, so let us solve now with proper steps. So first we'll find out angle AOC using ADC. So write down angle ADC is 32 degree, that is given. Angle AOC is equal to 2 times angle ADC. Angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference. पूरा reason लिखना है. Okay, no short forms. So angle AOC will be twice ADC. कितना है? 32 degree. Value put करना है. Okay, so angle AOC will be 64 degree. We got AOC. AOC and BOC are forming a linear pair. Why? Because AOB is a straight line. And why AOB is a straight line? Because it is given to us that AB is the diameter. So diameter straight line hoga. So write down AB is the diameter of the circle with center O. Given. So AOB
is a straight line. Therefore, AOB is a straight line. Okay. So angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. Right? Linear पे AOC 64 है, वैल्यू पुट करेंगे. Write down over here angle AOC is equal to 64 degree proven. या फिर इसको मार्क कर दो as 1 and write down from 1. Okay. Angle BOC is 180 minus 64, that is BOC will be equal to 116 degree. Alright, so box or underline the answer. Angle BOC is 116 degree.